Hey guys, welcome back to our channel. So this week so far, okay, Bank Nifty is trying to go down, but it's not able to. उसमें selling में उतना strength नहीं है as of now, and the market has gone pretty sideways in the last 2 days particularly. So let's see what we can analyze for this week, okay, and based on today's trading, what can be done for tomorrow. So first thing मैं weekly chart में आ रहा हूँ. Weekly chart में मुझे पिछला वीक का जो कैंडल है, मुझे क्या दिख रहा है? मुझे क्या दिख रहा है weekly chart में? मुझे दिख रहा है कि अप मूव के बाद इसने पुल बैक किया है. तो अगर ये हायर हाई लगाएगा देन हमारा अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट का बायस हो जाएगा हमारा अप साइड पे. ओके, एंड एक और चीज हमने डिस्कस की थी, यूजुअली टॉप कैसे बनता है. टॉप में यू नीड अ रेड कैंडल एंड उसके लो के नीचे यू नीड अनदर रेड कैंडल क्लोज. ओके, सो देन ये हाई आने को वापस बहुत टाइम लगता है. तो अब तक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई लगाया नहीं अब तक. अभी इट्स वेरी ट्रिकी इन दिस रीजन. मार्केट वेंट कंप्लीटली साइडवेज इन दिस रीजन. ओके, सो देखने का हमको कि वी कैन द वीकली कैंडल क्लोज इन दैट रेंज कि नहीं कर पाएगा वो. लेट्स ट्राई टू सी इन दिस वीक ऑन फ्राइडे. सो अभी डेली चार्ट पे व्हाट कैन वी सी इन द डेली चार्ट. फर्स्ट थिंग, द कैंडलस्टिक पैटर्न. ओके, सो दिस कैंडलस्टिक पैटर्न इट्स लाइक अ बुलिश कैंडल फॉर मी. इट्स सॉर्ट ऑफ थोड़ा दोजी टाइप का है, पर लास्ट में सेलिंग आया इसलिए था वो. एक्चुअली इट वाज अ पिन बार कैंडल. दिन में तो अच्छा पिन बार दिख रहा था वो, एंड में थोड़ा मार्केट नीचे आया है. बट ये जो लॉन्ग वीक है मेरे लिए बुलिश रहता है वो. अभी कल मैंने एक पढ़ा था कमेंट निकिता के वीडियो में, उन्होंने बोला था कि ये हर बार बुलिश क्यों देते हैं. देखो, हर बार बुलिश नहीं देते हम. वी ऑल्सो सेल कॉल्स अग्रेसिवली. ओके, बट आई टेल यू व्हाई द बुलिश बायस मेक सेंस नाउ. लुक एट दिस लो वन, और ये लो, दिस इज अ हायर लो, राइट, ये वाला. तो मान लो ये जो मार्केट नीचे आ रहा है जब भी, ओके, इमेजिन द मार्केट्स कमिंग डाउन, and just because it's coming down you take a bearish bias. Okay, so what is going to happen when the market goes up? It's going to be very ferocious for you. So if it goes up in this time you won't be able to make money, correct? So that's why in technical analysis जब तक higher lows है, okay, bias has to be bullish. Okay, अभी भी higher lows है हमारा. तो if we get lower low अगर बनता है हमारा, then we can start to plan bearishness. Okay, or if we get a very good candle sort of thing, okay, अगर कोई अच्छी कैंडल वगैरह से जाता है नीचे, देन वी कैन कैप्चर इट. अदरवाइज इट द स्ट्रक्चर हैज टू बी बेरिश. तो स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द पुट सेल और बुलिश बायस का व्यू. दैट्स व्हाई वो है हमारा. ओके, सो व्हाट इट कैन डू, ईदर इट हैज टू गो बिलो दिस. ओके, इसके नीचे अगर चले गया और कैंडल क्लोज हो गया डेली चार्ट में, देन हमारा व्यू बेरिश हो जाएगा. या तो व्हाट इट कैन डू, इट कैन गो अप एंड मेक अ लो लाइक दिस, समथिंग हियर, then again we can go bearish, but we need a lower low on the daily chart. Okay, so I hope I'm clear why we are having the bullish bias. So the structure is bullish as of now, and we've gotten a good wick here. So let's try to see in the 15-minute time frame how does this look. See, 15-minute time frame pe I can see two things. First thing was this was a support. Okay, it was broken here, came down, retested, and again went down, correct? So whenever price approaches here for the first time, there can be some resistance near 47,200. That's the first thing I see. Second thing what I can see, after the price has come down, नीचे आने के बाद, okay, यहाँ पे price is trying to break out of this zone. So 1, 2, 3, 4, 5. So this resistance, okay, if it's broken out, this might turn into a support whenever market if it tries to go up. Okay, so मेरा view क्या रहेगा, अभी ये जो resistance है बहुत बार it has tried to go up. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 times market has tried to go up. So I have told you a rule, जितने टाइम भी market tries to test a level, उतना वो level weak हो जाता है. Because if the price is really that weak, then why is it trying to always go up and break the resistance? Okay, so this gives me sort of की plan bullishness. Okay, but we won't if market नीचे खुल जाता है वगैरह कल, तो we won't plan bullish. We need a candle close above this resistance. Second thing मुझे क्या दिख रहा है, I can see this ये एक पिन बार सॉर्ट ऑफ कैंडल है, इसमें विक बहुत बड़ा है. ओके, सो प्राइस ने ये लेवल को रिजेक्ट किया है. सो दिस बिकम्स सपोर्ट फॉर मी. जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा हो सकता है बाउंस ले ले, और इसके नीचे बेरिशनेस प्लान करना चाहिए अभी 46,000 के नीचे. तो सिंपल अप साइड में यू हैव टू लुक फॉर दिस लेवल, डाउन साइड में यू हैव टू लुक फॉर 46,000. अप साइड लेवल आई विल टेल यू, द अप साइड लेवल इज कमिंग अप टू 46,750 अप्रोक्सीमेटली. Okay, 750 के ऊपर if it starts to go, then we'll form a bullish bias with a strong candle. Okay, so Nifty on the weekly chart, all these 3 weeks of green, okay, it took them out with a red candle.
Okay, with this red candle took out the last 2-3 weeks lows. Okay, which means like there are some sort of sellers present here. So ideally what we need, agar if you want to play bullish in Nifty, we have to close above this red candle. Okay, then we can probably estimate ki like buyers have regained their strength or something. So currently what is price trying to do? Currently it is forming an inside candle. Let's see the next 2-3 days also if it sustains here, because then we'll get an inside candle on the weekly time frame. Then we can trade according to that inside candle. Okay, and if you haven't seen Nikita's video, yesterday she released it. It's a very good video on inside candles, especially because I've seen many videos on inside candles, but उनका accuracy बहुत कम है. तो अगर मैं ट्रेड करूँ तो मुझे 10 ट्रेड्स में से 7 ट्रेड्स में लॉस होना है, 3 ट्रेड्स में प्रॉफिट होना है. तो व्हाट हैपेंस, जितना एक्यूरेसी कम है सिस्टम का, द कॉन्फिडेंस टू डिप्लॉय इट गोज डाउन मोर एंड मोर. So she has told you some filters, okay, which you can use to increase your accuracy with inside candles. So I'll probably tell her to cover that video whenever Nifty closes in this week. Daily chart pe what can we see? We can see this inside candles. Again, the bad thing for bulls is, ki the market is in Nifty especially, price is again trying to go down 4 times. It has tried to come down, okay? And since a long time now, we have been looking at this level, which is 21,875. Okay, this level, we need Nifty to close below this. Then we can start the down move. Now, why that level? Because the Nifty is coming here again and again. It's bouncing from this zone. So if we close below this zone, then finally bearish रह गया. The planning bearishness की करनी पड़ेगी फिर. Okay, so Nifty usually this is making an inside candles, so we'll trade that. So in Nifty, what can I see? This was a support, it was broken here, came down, did a retest, and again came down, right? So once Nifty clears this zone, which is if it starts to go above 22,230, then we can start to say that like the price, at least structure has become bullish then in Nifty, especially in the 15-minute time frame. Currently this down thing is again coming down every day. This is not good for the bulls. Okay, so Bank Nifty may we are seeing it's trying to go up, Nifty may we are seeing it's trying to come down again and again. So let's see who wins. Okay, usually the moves are pretty good अगर दोनों same sync में काम कर रहे हैं. मान लो Bank Nifty is also trying to break down, Nifty also like trying to give a breakdown, then the move is pretty decent. तो हम क्या करेंगे Nifty में भी, ये जोन में we have to play neutral only, and outside this zone, above this zone we'll try to play bullish, below this we have to play bearish because बहुत बार टेस्ट हो चुका है सपोर्ट पे अभी, so it has gotten weaker in Nifty. Okay, so let's see. I guess that was it for my video for today. So it's kind of wait and watch, as to where the market is going to go, upside or downside. Then we'll probably plan our trade. Okay, so I hope something like was useful to you from this video, and I hope you learned something. And let's try to see where the market goes. We'll try to trade in that direction. Thank you so much as always for watching this video. Don't forget to hit the like button, okay? And we'll be coming out with more learning content for you this week. So subscribe to our channel if you haven't done it already, because you'll be missing out if you don't. So I'll see you tomorrow.